Hi, friends. Time and again, I keep hearing this narrative, and today also I saw one narrative in Twitter telling that SC ST OBC kids are freeloaders. We take everything for free. We are bikaris, whatnot. So आ गया भिखारी देखो like reservation लेने के लिए. And then one more thing is that they keep telling that how much more will you eat? That why are you eating my pie? So this is a question which hurts me a lot, because the real fact is that you have to understand that SC ST OBC kids are not eating anybody's pie. Actually, the general merit is eating SC ST OBC pie. I'm going to show this clearly using the faculty representation in 45 central universities. My friend, 45 central universities are the topmost universities in this country. And then this data is from UGC Annual Report 2022-23, page number 168. Go to the website and get this. So this is not my data. So please understand, this is not my data. And this is a data directly taken from government portals. So now, coming to the first data, my friends, such a disaster when I see these things, because many a times people tell that, bhai, tum to 50% le rahe ho. How much more you want? But the question, my friends, to be seen is that what does the real data show? The real data shows that 50% is not there. So that is the thing which I want to tell you. Where is 50% here? General category representation in professors is 82.36%. SCs, it is 7.39%. ST is 1.77%. OBC is 6.29%. Kaha hai bhai 50%? I want to ask you this question, really. Why do you keep asking this question again and again, telling that तुम तो कह रहे हो 50%? कहाँ है 50%? That is my question. Now, the next important question is, many people keep telling that आपके पास तो merit ही नहीं है. You can't become professors. So, what I noticed was, if merit ही नहीं है, and then there are so many people getting out of PhDs, then when there are so many people joining the mainstream from the engineering colleges, higher education seats, why is the vacancy so high? Why are the SC ST OBC vacancies not filled while the general category vacancies are filled? You can see here that the general category vacancies to sanction post is just 45.89%, while SC ST OBC it is 75.57 for SCs, 87.32% for STs, 83.16% for OBCs. आप तो 87% सीट्स वेकेंट रख रहे हैं ST पे, 83% सीट्स वेकेंट रख रहे हैं OBC पे. My question is, are we not able to find students at all for these positions? This is a very important issue, because see, and then one more question they will tell that, hey, professor तो है, बहुत higher positions है, lower positions में होगा representation. So we will see that also, friends. But before that I want to tell you, ये sanction post क्यों 60% हो गया जनरल को? It should be 50%, correct? Why is it 60% for general? Because आप तो रोस्टर रख रहे हैं पूरा, वो 50% रिजर्वेशन तो मैंडेटेड है, बट ये कैसा हो गया? सैंक्शन पोस्ट 60% फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर SC इट इज 12 एंड ST 5.56, OBC के लिए 14.65, एक बिग गैप, दैट इज 27. आपके पास पोस्ट ही नहीं है फिल करने के लिए. आपके पास पोस्ट होगा तो फिल करेंगे, मगर आप देखिए यहाँ पर पोस्ट ही नहीं है, कैसे फिल करेंगे आप? So if the posts are not there, the post will never be filled up. आपके पास तो, see, the problem here is not that SC ST OBC kids are not there. यहाँ तो पोस्ट नहीं है, sanction पोस्ट नहीं है first of all, then vacancies are not filled up. That is the second point which I want to tell you. अब देखिए नेक्स्ट लेवल पे एसोसिएट प्रोफेसर्स पे भी देखिए वही हालत है. वो लोग बोलते रहते हैं लाइक 50% है 50% है. कहाँ है भाई? आप देखिए जनरल कैटेगरी में
81% फिल हुआ है. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल कैटेगरी इन एसोसिएट प्रोफेसर. SC ST OBC में कितना है? 8.01% है, 2.61% है, 6.72% है. हालत तो बहुत बुरा है. मगर लोग बोल रहे हैं हम तो 50% दे रहे हैं, अब तो बोल रहे हैं 70% कर देंगे रिजर्वेशन को. आई वॉन्ट टू टेल देम वेयर इज इट. 50% ही नहीं अचीव हुआ है, लाइक इट हैज नॉट बीन अचीव्ड. आप 70% 60% वो बोल रहे हैं. सो हाउ इज इट गोइंग टू बी अचीव्ड? सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर वी गोइंग टू मेक दिस 50% फॉर एसोसिएट प्रोफेसर इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी? कैसे करेंगे आप? अगेन आप देखिए यहाँ पर भी वेकेंट टू सैंक्शन, दैट इज वैकेंसी ही नहीं भरा हुआ है. हिस्ट्री पे 75% वेकेंट है, ओबीसी पे 75% है. ईडब्ल्यूएस देखिए अभी आया है, सो इट्स वेरी वेरी अनलाइकली दैट इट विल बी फिल्ड अप. मगर अब देखिए SC ST OBC तो 30 ईयर्स हो गया है, बहुत साल हो गया है, मगर फिर भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है. SC ST तो 1951 से है, ये क्यों नहीं हुआ है? सो अगर आप देखिए यहीं पर भी सैंक्शन पोस्ट परसेंटेज, सैंक्शन पोस्ट 50% होना चाहिए जनरल को, SC ST OBC. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, पोस्ट ही नहीं है भाई फिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल. और उसके बाद तो वेकेंट सीट्स को वेकेंट ही रख देंगे, बैकलॉग रख देंगे, वो नहीं फिल करेंगे. सो इसके वजह से क्या होगा, इट विल नेवर बी फिल्ड अप. सो दिस इज द प्रॉब्लम. सो आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स पे भी देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स में भी आप देखिए यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है, सैंक्शन पोस्ट ज़्यादा हुआ है 50%. मगर अगेन आप देखिए वैकेंसी पोस्ट हाईएस्ट इज देयर एट OBC, दैट इज 26. अब थोड़ा मैं एसोसिएट प्रोफेसर में दिखा दूंगा. लाइक फॉर एग्जांपल देखिए इन जनरल कैटेगरी वैकेंसी पोजीशन इज ओनली 23.60, बट अदर्स अब देखिए 75%, 74%. So only general category positions are getting filled up in all these colleges. The same thing is there in assistant professors. 11.58% vacant है, that's all in general category. But in SC ST OBCs it is still very high. OBCs तो बहुत ही ज़्यादा है, 26%. So why is it not getting filled up? So these are the questions which we should ask. And यहाँ भी देखिए लोअर लेवल पे भी 60% है जनरल कैटेगरी का. कहाँ है भाई 50%? कहाँ रहे हैं सभी लोग रिजर्वेशन लेके? सो ये तो बहुत ही गलत है. लाइक व्हेन पीपल टेल दैट वी आर ईटिंग समबडीज पाई, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है. क्यों? बिकॉज सी SC ST OBCs आर स्ट्रगलिंग टू मेक ए मार्क. दे आर एंटरिंग एंड देन दे ट्राइंग टू बी सक्सेसफुल. दे आर ट्राइंग टू make a living for themselves. But if you see the data, it is not like that. It is still the representation is not achieved anywhere. आप देखिए उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स को छोड़ दीजिए, नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर आइए. वो तो टीचिंग में बोल सकते हैं कि लाइक SC ST OBC लोग नहीं है, मगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में तो रहेंगे. मगर यहाँ भी देखिए क्या हुआ है. यहाँ देखिए यहाँ भी 80.99% filled up posts are from general category. SC is just 5.85, ST 4.06, OBC is just 7.88. आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंक्शन नंबर ऑफ पोस्ट ही नहीं है. सैंक्शन नंबर ऑफ पोस्ट जनरल में 80% है ऑलमोस्ट, SC में ST में 5.64. सो आप बोलिए आप पोस्ट ही नहीं है, आप कैसे भरोगे? आप 80% का जनरल सीट है, आप कैसे? ये रोस्टर का मामला है भाई. अब देखिए ये तो 50-50 होना चाहिए जनरल और SC ST OBC में, मगर यहाँ तो 80 हो गया है. कैसा हो गया है ये? सो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैज हैपेंड. सो दिस प्रॉबली हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ डी रिजर्वेशन. सी बिकॉज वंस व्हेन यू इनिशियली आपको 50-50 होगा और उसके बाद वैकेंसीज रहेगा, उसके बाद वो कन्वर्ट होगा जनरल को, उसकी बराबर ये इंक्रीज होगा. सो वी डोंट नो हाउ दिस हैज हैपेंड. सो सीट्स ही नहीं है फिल करने के लिए, आप कैसे सीट्स फिल करेंगे? आप यहाँ तो 80% सीट सैंक्शन पोस्ट जनरल का है. सो दिस इज द प्रॉब्लम विच आई एम टेलिंग. एक ग्रुप में भी देखिए यही हालत है. फिल्ड अप पोस्ट फॉर जनरल कैटेगरी 70.91, 70.91, SC 10.29, 5.10, 11.49 for OBCs. So again आप vacancies are always badly filled up in this. The most important thing I wanted to मैं highlight करना चाहता था आज,
वो ग्रुप सी का है. सी आप ग्रुप सी में कैंडिडेट अवेलेबल, यू कांट टेल दैट. सो बिकॉज सी ग्रुप सी तो बहुत ही लो एंड जॉब है. यू विल गेट पीपल फॉर दिस. अगेन आप देखिए यहाँ पर भी फिल्डअप पोस्ट है 71.39%. दैट इज जनरल कैटेगरी पोजिशन इज 71.39%. SC ST OBC का तो 9.52, 5.60, 11.66 है. ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? देखिए सैंक्शन नंबर ऑफ पोस्ट ही नहीं है भाई. सैंक्शन नंबर ऑफ पोस्ट फॉर जनरल इज 65.77%. 50 नहीं है ये. सो आपके पास 50 सीट्स ही नहीं है. आप कैसे फिल करोगे 50? सो what I am telling you is that the SC ST OBCs are not looking into all this data, and instead they are getting hijacked by all these narratives that they are being like eating the pie. And actually I'm telling you, there is no seats, there are no sanction posts for you to be filling those posts. Or again, vacancies to always OBC seats are kept mostly vacant, then SC ST seats get filled up. They are the second to be filled up. General तो बहुत ही places में fill हो जाता है. So now the key questions to be asked now is, a sanction post, why are they not in the proportion of reservation prescribed? Why is it not 50-50%? आप देख चुके हैं, like पोस्ट ही नहीं है fill up करने के लिए. So if you don't have 50-50% sanction post for SC ST OBC, ये fill up नहीं होगा. Then क्यों SC ST OBC का वैकेंसी बहुत ज़्यादा है? वाई इज दैट ऑलवेज देयर आर बैकलॉग वैकेंसीज इन SC ST OBC? दैट इज अनदर क्वेश्चन. देन आप देख लिया, लाइक इवन इन ग्रुप B, ग्रुप C, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन, वो टीचिंग जॉब नहीं है. हाउ कैन द सैंक्शन पोस्ट बी सो हाई फॉर SC ST OBC? सो दिस आर ऑल लो एंड जॉब्स. ये तो हाई एंड जॉब्स नहीं है. यहाँ तो बहुत लोग काम करने के लिए आज मिल सकते हैं. सो बट इट इज नॉट गेटिंग दिस थिंग, नॉट गेटिंग फिल्ड अप. So the question now is, why this is happening, my friends? I'll tell you. Because all the central universities are autonomous institutions. They have been given powers, independent powers. The boards have independent power. ये लोग UPSC में नहीं रिक्रूटमेंट हो रहा है यहाँ पे. आप देखिए IAS, IPS, IRS सभी लोगों का UPSC रिक्रूटमेंट करता है. So UPSC does a very fair job, very transparent job. But यहाँ तो पूरा वो डायरेक्टर के पास है रिक्रूटमेंट. So now the question is, should we remove the autonomy of all this institution? So one needs to ponder about these things, and these are the